I sat there, terrified, alone. I wondered if there was any chance of going back again, as though it were a dream. I was in this new world, which felt like a nightmare I couldn't wake up from. अस्सलामुअलैकुम। यूसीपी टीवी के साथ मैं हूँ हफ्सा इरफान और आज हम हमारे स्टूडियो में एक अहम गेस्ट मौजूद हैं जो कि ऑथर है लॉस्ट टू द वर्ल्ड अ मेमोयर टू फेथ फैमिली एंड 5 years in terrorist captivity. He is also a businessman and son of late Governor Punjab, Pakistan. He held in captivity for almost 5 years and get back in 8 March 2016 at Kuchlak, Balochistan. Let's introduce our guest. Assalamu alaikum, sir. How are you? Assalam. Thank you for having me. Thank you, sir. Sir, you have written down a tremendous memoir. So, can you please just introduce your book? My book is, like you said, a memoir of faith and family and 5 years in terrorist captivity. It's I like to say an adventure travelogue through lawless areas of Pakistan and Afghanistan. But more importantly, it's a story of hope and a story of surviving. And I really, it fills my heart with joy that, young students like yourself are reading it and are interested. And that's really what I want. I want young people to read my story and enjoy it. Yes. So, sir, what difficulties you face while writing the book? Besides not being an author, it was difficult, मैं बता रहा था कि आसान होता है लोगों के साथ बात करना, उनके साथ कनेक्ट होना वर्बली, बट जब आप एक एक्सपीरियंस को लिटरेचर में लिखने की कोशिश करते हैं तो इट कम्स विद इट्स ओन डिफ़िकल्टीज. तो it wasn't easy. Plus, it's I like to say it's a travel log, but it's emotionally it was a bit difficult as well. Talking about captivity, talking about torture, talking about being taken away from your family for so long. So revisiting these places was difficult, but I'm very lucky. One, Allah gave me a second chance to live. Two, I have very brave, माशाल्लाह, parents. मेरे दोनों वालिदैन बहुत बहादुर हैं, बहुत सब्र करने वाले लोग हैं. और स्पेशली मेरी वालदा, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में अब आसानी करे. और I have an amazing home as well, where I have a lot of support from my wife. You need stability. My kids. So yeah, that helps जब आप एक इतनी मुश्किल चीज़ करना चाहो. और ये है मुश्किल, but I'm really glad that it's another difficulty that I overcame. Yes. So, sir, in your book, while I was reading, I get it that you have portrayed the physical and mental violence, and you also reveal the truths of terrorists. So, it might lead to conflicts and different controversy, and also a criticism. And I think that you have already gotten the criticism. So, what was the motivation behind it? देखें, if you have survived what I've been through, एक चीज़ जो मैं हर आदमी को कहूँगा कि आपको सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरना चाहिए और किसी इंसान से नहीं डरना चाहिए. Having said that, हम इंसान हैं, ज़ईफ़ क्रिएशन है. मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जितना आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं बेहतरी अपने लिए, विदाउट केयरिंग किसी और की ओपिनियन क्या है, इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड आई टोल्ड यू आई एम ऑन अ जर्नी ऑफ, आई बिलीव इन ग्रोथ एज अ ह्यूमन बीइंग. आपको ये चीज़ कभी रोकनी नहीं चाहिए. यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू डू द बेस्ट दैट यू कैन फॉर योर सेल्फ एंड almost be ruthless in your ambition for yourself. Yes. और अगर आपने ये करना है, don't let what other people say matter. You have to put it
on the side. Although constructive criticism about your art is different. I'm talking about, for example, मौलवी लोग क्या कहेंगे, I don't care. कोई टेररिस्ट क्या कहेगा कि मैं उसके बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, I don't care. I'm only scared of Allah. And I'm not, and you know, and I'm very lucky कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है कि मेरा डर फोकस्ड है. और आई थिंक जब आपके पास वो फोकस हो, यू कैन डू जस्ट अबाउट एनीथिंग without caring what other people think. And I would advise you, because you're young guys, you're young students, and you have your whole lives in front of you. You have to overcome so many difficulties. And ये कभी ना सोचें कि आपकी मुश्किलात या किसी और की मुश्किलात ज़्यादा है आपकी कम है. हर इंसान की एक जैसा ही वेट होता है. So don't care what other people say and do the best you can for yourself. Yes, of course, it's all about faith, and everyone have their own suffering. We can't judge anyone. So, do you get flashback, and how you go through the post-traumatic stress disorder? I don't get flashbacks. I'm very lucky. I don't have post-traumatic stress disorder. Again, I'm very lucky. I have other problems I was telling you. Whether it's the slouch in my spine because of being chained for so many years. I told you about some medical problems that I have because of my starvation and my diet. I have that ringing in my ear, tinnitus. I can't even pronounce it. But more than any of the setbacks, मेरे पास मेरी पूरी ज़िंदगी है to look forward to. And I have my freedom that I can be optimistic about. ये चीज़ें जो हैं ये लाइटली नहीं लेनी चाहिए किसी को. अगर आपकी ज़िंदगी कोई छीन ले आपसे और आपको ये वापस मिले, you should have a unbelievable sense of appreciation. So, and even if I have any, for example, I was telling you, ये मेरे लिए कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, शायद 50 साल की उम्र पे होनी चाहिए थी, जो 30 साल की उम्र पे होना शुरू हो गई हैं. But you can overcome anything. Yes, you can. So, being a writer myself, I think that writing is a catharsis, and I have read so many texts, which जो मुझे लगता है कि पढ़ते हैं तो वो लगता है कि जैसे राइटर एक बात बता रहा है, और वो पढ़ने से आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आपका ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है. तो डू यू फील लाइक दिस कि हाँ, मेरे लिए ये एक हीलिंग एक्सरसाइज थी. मतलब कभी कभार ना आप समझते हैं कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैंने ये सब कुछ कर दिया. ये एक कॉम्प्लेक्स होता है. और मैं आपको बता रहा था, हम ज़ईफ़ क्रिएशन है अल्लाह की, कमज़ोर हैं. We are overcome with pride and by our own sense of ego. It's crazy. तो हर दिन शुरू करो being a little humble. When you have a little bit of humbleness in your life, you can really direct your focus. And I do that. Like, no matter what it is, what issue I'm facing in life, I just try and keep my focus and just go about my day and not let some kind of a complex come in the way of achieving what I want to achieve. All right. So, you are a parent, you are a father. So, कोई इम्पैक्ट तो होता है, ऑफ कोर्स. एक उनका तो अभी फ्यूचर पड़ा हुआ है, उनकी पूरी लाइफ है. तो डू यू थिंक कि उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, और वो आप किस तरह से आप उनको लेके चलते हैं अपने साथ? ऑफ कोर्स दे आर किड्स, आई नो देम. तो नहीं, देखें, बड़ी फ़नी बात है. मेरे वालिद साहब, मैं सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, सख्त आदमी नहीं थे. प्रिंसिपल्ड आदमी थे. और क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी, एंड ही वाज अ सेल्फ मेड मैन, ही केम फ्रॉम नथिंग. तो वो बहुत कह सकते हैं, ही वुड पुश his children to be the best that they, or at least take the best advantage of the opportunity that they had. The only thing that I want from my kids is a sense of love for this country and its people. ये कोई हवाई बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हर पाकिस्तानी बच्चे के दिल में होना चाहिए. And the only other thing that I would have, and मैं आपको ये थोड़ा सा कहानी बताऊंगा. मुझे
बहुत लोग पूछते हैं what helped you through your kidnapping? Yes. Not any kind of formal education or university or a teacher that I had in my life. बट मेरी पूरी ज़िंदगी मेरे वालिद साहब जो है ना वो मुझे अपनी स्ट्रगल का बताते थे। जब वो स्टूडेंट थे उनके पास पैसे नहीं थे और वो एक मार्स की चॉकलेट ख़रीदते थे और वो 2 हिस्से में खाते थे एंड दैट वाज इनफ न्यूट्रिशन फॉर अ डे फॉर हिम एज अ स्टूडेंट। तो जब मुझे स्टार्व किया जाता था तो मैं याद करता था, पहले तो मुश्किल था बट जब एक पॉइंट आया मैंने याद किया कि यार मेरे वालिद ने he starved so that I could have a better life. And that gave me strength. जब मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में था और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बड़ी ख़तरनाक जगह है, आपको यू कम फेस टू फेस विद योर सेल्फ और कोई आपका दुश्मन नहीं है। यू रियलाइज माई ब्रेन इज़ माई वर्स्ट एनिमी एंड यू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कंज्यूम्स यू, इट्स अ डार्कनेस, वो आपकी रूह को कंज्यूम कर देती है और वो आपको ऐसे तोड़ती है और एक ऐसा ज़ख़म छोड़ती है जो कभी हील नहीं हो सकता। और किसी इंसान को इतनी डार्क जगह में जाना भी नहीं चाहिए और रखना भी नहीं चाहिए। मगर जब मैं उधर था मुझे मेरे अब्बा की कहानियाँ याद आती थी। जब मैं छोटा था वो मुझे कहता, मतलब मैं कुछ कर रहा होता तो कहता तुम इतने अनग्रेटफुल हो। जब मैं शाही किले में था तो एंड आई बी लाइक यार माफ़ करो। जब मैं अपने किले में था तो मुझे उस आदमी की स्ट्रगल याद आई। वो रातें जो उसने उधर काटी थी, नॉट क्योंकि वो मैं काट रहा था बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस दैट माई फादर मेड, बट उसने ये किया था सो दैट ऑल ऑफ अस कुड हैव अ बेटर चांस इन दिस कंट्री। इट वाज वेरी सेल्फलेस एक्ट। कितने लोग ये करते हैं। एंड आई वुड रिमेंबर दैट and it gave me strength in solitary confinement. So स्कूल में मैंने नहीं कभी कुछ सीखा या यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा ऐसे चीज़ के साथ डील करने में, लेकिन मैंने अपने वालदैन से सीखा, सब्र सीखा, पेशेंस सीखी थोड़ी सी। जब ज़िंदगी जब हालात आपके हक में ना हो कभी, और ये होता है ज़िंदगी इट्स अ रोड एंड कोई रोड सीधी नहीं एंड तक जाती। So how do you deal when the odds, how you deal with problems when the odds are against you? It proves what metal you're made out of. And मेरी ख़ानदान में वो है, हमारी लोअर है कि I'm not made from a wood that burns easy. Yeah. So I try my best to honor my family's lore every day. Yeah. So you are from political family. So what's your take about politics? I have a very, I'm a young working guy. Well, I don't know, not young in front of you guys, but yes. It's very difficult. Sometimes you can feel a little angry about the situation in the country as well. My advice to stakeholders is ये अकेली सियासतें और every country has कुछ लोग कहते हैं इमरान खान इज़ माई रेड लाइन, बट एक्चुअली मुल्कों में रेड लाइन होती है। एंड what I'm trying to tell you is that if all of these guys don't sit together, then जो आपका सबसे लोएस्ट जो आपके लोग हैं इस मुल्क में, जो सबसे एक्चुअली ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, अगर वो आए तो वो किसी इंसान परस्ती में नहीं फंसते, वो अपने हक के लिए फिर आएंगे। एंड दैट्स very dangerous. The revolutions are common throughout human history. You just have to study history to be better and evolve your society so that it's sustainable. We don't want Pakistan to become unsustainable. And my only advice is that सारे stakeholders जो हैं, क्योंकि 4-5 ही हैं, और कितना मुश्किल होता होगा 4-5 लोगों को एक कमरे में बैठ के एक solution निकालना. The solutions are actually very easy. If you sit with trained professionals, they'll give you a solution. But coming to your first point, मेरे वालिद की एक legacy politics में है, मगर हम really मेरी family यकीन करती है with all our things. Yes, he has a political legacy, but he has an unbelievable business legacy that people in this country don't know about. Yes. He is one of the reasons why we have internet in this country. He is one of the reasons why we have so many TV channels in this country. And he swore that he would give you this technology at 150 rupees to every house.
you know. एंड सारे कहते थे ये क्या आप करना है, इधर पाकिस्तानियों को इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो उनको 96 7 and look at us today. Yes. Mobile, highest mobile consumers, smartphones, internet, everything. So I have two legacies. There's the political side of things, and then there's the business side of things. And I am working for both, but currently for the one that's more important. So because you have to sustain to grow, right? Whatever it is. So I need this legacy to be recognized for what it is, and then we'll look into, because this one is, whatever it is, there are a lot of disappointments in politics. It hurts, when you trust people or you've done things for people and it's not the way it is. You have to grow as a human being and understand and be indifferent to work with these people. They're not easy people to work with. So politics isn't exactly for me. I told you before, मैं थोड़ा सा nervous or shy बंदा हूँ. I'm not a public speaking. I mean, I have an amazing opportunity to do all this, but it's not for me. So, what message you want to give to emerging writers who want to write on the issues of Pakistan, who want to bring forth the issues of Pakistan? Just in a line, what message you want to convey? Write. Just write. It's such a beautiful gift. Everybody doesn't have the time for it. So if it's your profession, write responsibly. That's the only thing I'll tell you. But write with your heart, and from your heart. One of the reasons that this book exists is because of my mother and my mamu. My mamu's not with me, but he put his heart in so that I could finish this. And so when you read it, you'll feel that. I wrote this book from my heart, from my being. And जो भी पढ़ता है, that if it affects you emotionally, that's why. Yes. So he's a very great man. What a strong man he is. तो नाज़रीन, हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए. खुदा पर हमेशा यकीन रखना चाहिए, क्योंकि मुसीबतें आती जाती रहती हैं. यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.